Viewers, two people have lost their lives after an iron bridge collapsed in a popular tourist spot in the Pune district of Maharashtra. 32 people have been rescued so far after the bridge collapse incident. NDRF teams were dispatched to conduct rescue operations at the spot. Being a Sunday, tourists flocked this area, which led to the sudden collapse of the bridge and many being swept away in the river. Following the alert, local police, villagers and disaster response teams rushed to the spot and launched the rescue operations. Heavy rainfall over the past 2 days, remember, has caused a significant rise in the water levels of the Indrayani River. Rescue agencies are making every possible effort to save those who have fallen into the river. प्लेस है वाटरफॉल के बाजू में, ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। इसमें अब तक की इंफॉर्मेशन के तहत 2 कैजुअलिटीज है और 6 से 7 लोग जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल में रवाना है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है। All right, with that, let's also get to the breaking news coming in. The death toll has now mounted to 4 people. About 38 people have been rescued so far by the NDRF. There's also a possibility of more tourists being trapped under the debris of the bridge that had collapsed in the Kunmala area in Pune. But the toll now rising to 4, this unfortunate incident. Of course, 5 lakh ex gratia rupees have been announced. But remember, so far as rescue operations are concerned, 38 people have been rescued, but unfortunately, 4 have lost their lives. My colleague Rucha is joining us on the phone line. Rucha, unfortunate that 4 people have lost their lives. The good part is that 38 people have been rescued. What is the current status of the rescue operations in Kunmala? Well, as of now, the latest we are learning is that 4 people have unfortunately lost their lives in the unfortunate incident. 2 more bodies were taken out from the structure of the bridge which had fallen into the Indrayani River, and the NDRF search operation, the rescue operation, is still going on. Usually when it is dark, the rescue operation is stopped, and earlier we got to know that the search operation will be continued tomorrow in the morning, but as we are learning that the rescue operations are still underway, some people are still feared to be stuck under the structure of the remaining part of the bridge which had collapsed into the river. The ministers, local authorities are on the spot. The efforts are going on, and as of now, 38 people have been admitted to the hospital. Fortunately, nobody from those 38 is in any critical condition. All are having minor injuries, including fractures on their body. But unfortunately, after the tragic incident, 4 people have lost their lives, and 1 bike is also stuck under the bridge. Now the efforts are underway to take out the people that are stuck under the remaining structure of the bridge. And all right, of course, so rescue operations are still underway. Rucha, my colleague, getting us more of what's happening in Kunmala as we speak. Viewers, remember, the rescue agencies are currently carrying out the rescue ops in Kunmala, where this bridge has collapsed. But remember, the Chief Minister, Devendra Fadnavis, has taken stock of the situation and as well. And he's assured that all efforts are being made to rescue those who are injured. NDRF teams have been deployed to rescue those who are stranded. The Deputy CM Ajit Pawar, who also happens to be Pune's Guardian Minister, has spoken with the District Collector and has sought a detailed report. मावळमध्ये जो काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे, आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे. आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये
काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत. त्यांच्याकरता NDRFची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता. काही लोक वाहून गेल्याची शक्यता आहे. अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही. त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही. पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल. आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे. मला कळवत आहे संख्येत तिथं गेलेले आहेत. वेगवेगळ्या माहिती मिळते. NDRFची टीम तिथं गेलेली आहे. आजूबाजूचे जे नगरपालिका वगैरे तिथली पण टीम तिथं गेलेली आहे आणि प्रथम दर्शनी असं सांगण्यात येतं की तिथं जो ब्रिज होता लोखंडी तो फार चढलेला होता आणि त्याच्यातनं जास्त लोक तिथं उभे राहिले आणि मोटरसायकल पण जात होत्या. त्या बोजाने ते खाली पडला. तिथं 8 कोटीचा एक ब्रिज ऑलरेडी मंजूर आहे, पण त्याच्याबद्दलची इत्थंभूत सगळी माहिती नीटपणे कलेक्टरला द्यायला सांगितलेली. कलेक्टर म्हणले काही काळामध्ये तुम्हाला देईल. Meanwhile, the opposition in the state, primarily the Shiv Sena UBT, has hit out at the Fadnavis government and has called this accident a result of the administration's negligence. The TMC has also hit out at the Maharashtra government. हमारे महाराष्ट्र के पुणे के पास तलेगांव में जो इंद्राणी पुल के टूट जाने की वजह से कई लोग बह गए. 2 लोग तो मृत भी हो गए हैं, कई लोग अभी घायल हैं, कई लोग अभी बह गए हैं. बचाव कार्य चल रहा है. NDRF की टीमें लगी हैं, पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है. लेकिन एक सवाल उठता है कि जब कोई ब्रिज जर्जर था और उसको बंद कर दिया गया था तो वहां पर प्रशासन क्यों नहीं था? वहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं थी? वहां पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? अरे हमारे देश में सुरक्षित क्या है? और उसके बाद भी वहां के सांसद, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था. लोग जानबूझकर वहां जाते हैं. देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपसे मांग करेंगे कि इसमें जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए. देखिए, ये महाराष्ट्र का पुणे में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है वो बैड न्यूज है. तो वहां पर जो रिलीफ वर्क वो ठीक ठाक होना चाहिए. तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन भाजपा वालों ये एक्सीडेंट लेकर भी पॉलिटिक्स करता है. जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है. तो अभी ये महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में वो नेग्लिजेंसी मेंटेनेंस का वो फ्लाइट गिर रहा है. तो सारे कई ऐसा सब हो रहा है. तो नरेंद्र मोदी जी की अभी यही बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है.